नमो लोये सौ हरिहन्ताणम् नमो लोये सौ सिदानम् नमो लोये सौ आहिर्यानम् नमो लोये सौ जयानम् नमो लोये सौ त्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोऽग्नि मंगलम् कुंकुंडारि उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः सुमरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निदाकार नियम सार श्लोक 155 प्लस અધિકાર પ્રાયશ્ચિતનો છે. પ્રાયશ્ચિતનો અર્થ સ્વરૂપ જે આત્માનું અતિન્દ્રિય આનંદ સ્વરૂપ આત્માનું છે એમાં એકાગ્ર થવું અને પુણ્ય ને પાપના મન વચન કાયાના શુભ ને અશુભ ભાવને છોડવા. हिंदी देना है, हिंदी है हो. मन वचन काया से कर्म जो क्रिया होती है उसको छोड़ना, अपना आत्मा का स्वरूप में लीन होना, उसका नाम कायोत्सर्ग प्रायश्चित और ज्ञान है. धर्म उसको कहते हैं. मन वचन काय की क्रिया को धर्म नहीं, ये पद है. अपना स्वरूप अंदर सचिदानंद सत फिरकाव लेनार ने ज्ञानानंद जनो स्वभाव जिसका है, ये स्वभाव में मन वचन काया की क्रिया का अभाव है. ये कारण है वो क्रिया को छोड़कर स्वरूप में एकाग्र होना. ये कायोत्सर्ग को हो, कायचिद को हो, सम्यक दर्शन को हो, ज्ञान को हो, समाधि को हो, ये બધા એને લાગુ પડते हैं. जो पहलो श्लोक 155 कायोत्सर्गो भूति सततम निश्चय निश्चया संयता नाम कायो उद्भत प्रबल तत्कर्म मुक्ति सकाशान वाचाम जल्प प्रकरण विरति मानसा नाम निवृत्ति स्वात्म ध्यान दल्पी नियतम स्वात्म निष्ठा प्राणायाम. उसका अर्थ जो निरंतर જેની વાત છે પ્રભુ સ્વાત્મનિષ્ઠ પરાયણ, જે નિરંતર સ્વ આત્મા આનંદ અને જ્ઞાન સ્વરૂપ સ્વ આત્મા उसमें निष्ठा परायण, स्वात्म निष्ठा एमा रहीने तत्पर रहूं. हाँ 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 हाँ, उसमें तत्पर रहना वो कायोत्सर्ग में प्राचित है. सामायिक ये यानी प्रतीक मन ये प्राचित है. आनंद स्वरूप भगवान उसका ज्ञान मूर्ति में एकाग्र होना और निरंतर स्वात्मनिष्ठ परायण. जिसको ये आत्मज्ञान हुआ हो, राग से भिन्न है, मन वचन काय की क्रिया से भी भिन्न है, ऐसा आत्मा को स्वात्मनिष्ठ परायण, जिस निज आत्मा में लीन, अपना आत्मा में लीन है. मारक भाई છે ब्याहो था. तब संयमियों को मुनि ने बात ली. साचा संत होय, भावलिंगी होय, बाय मा तो नग्नज होय, ऐसा साचा संयमियों को काया के उत्पन्न होने वाला, काया से उत्पन्न होने वाली क्रिया, जड़ की क्रिया, हाथ पग जैसे उसकी हलन चलन क्रिया, ये सब जड़ की क्रिया. ये काया की क्रिया से भिन्न है. काया से उत्पन्न होने वाला अति प्रबल कार्य એટલે ક્રિયા. ये काया शब्द संबंधी
ये प्रबल क्रिया हो उसके त्याग के कारण जड़ माटी या तो है धूल है, उसकी कोई पण क्रिया ये जड़ की क्रिया है, उसको त्याग करके एक बात, बीजी बात, क्योंकि वाणी के जल्प समूह को विरति के कारण, दूसरी बोल, पहले कायानी क्रिया तरफ का लक्ष्य छोड़ देना, पीछे वाणी का जल्प होना, बोलना, ये विकल अंदर उत्पन्न होना, इस समूह को विरति, उससे निवृत्ति होना। આનું નામ કાયું સર્ગ છે. બધા તો તસુ ત્રિકરણનું પ્રાયચિત કરણ કરીને થઈ જાય અપાણ ઓછે થઈ ગયો કાયું સર્ગ. सम्यक दर्शन बिना कैसर कहां से आया? ये आत्मा चिदानंद स्वरूप ऐसा भान नहीं, मैं ज्ञानानंद हूँ तो काया की क्रिया से भी भिन्न हूँ और वाणी की क्रिया से भी भिन्न हूँ। और तीसरा में देखो द्वितीय काम और मानसिक भावों की विभूति होती, और मानसिक क्रिया मन से विकल्प जो उड़ते हैं उससे भी मैं भिन्न हूँ। और ऐसा मार्ग है। मन वचन ने काया तीनों अजीव है, जड़ है, उसकी क्रिया से रहित अने अपना आत्मा में स्वात्मा आत्मा में निष्परायण तत्पर, पर से वीरती स्व में तत्पर, पर से वीरती स्व में रक्त, पर से विरक्त स्व में रक्त। पुण्य ने पाप ने मन ये बड़ी क्रियाओं से विरक्त और स्वरूप में रक्त, उसका नाम प्रायश्चित ने कायु सर्ग ने समकीत ने ज्ञान कहवा आते हैं। और मानसिक भावों को निवृत्ति के कारण तो मन वचन ने काया वो तो जड़ की क्रिया है। ये तो जड़ में है, आत्मा में तो ये है नहीं। मानसिक विकल्प जो उठे है अंदर में, मन में कल्पना, ये भी मानसिक क्रिया है, आत्मिक नहीं। उससे हटकर विरती करके चला लिया। पहले में ऐसा लिया कि गाय से उत्पन्न वाला मां कर्मों से त्याग के कारण, અને વાણીથી जल्प समूह यानी वृत्ति के कारण, અને मानसिक भाव की निवृत्ति के कारण, करने तरह शब्द भिन्न भिन्न। समझ में आया? तथा निज आत्मा के ध्यान के कारण अपना आत्मा आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप एनी सत्ता एनी हरियाती ज्ञान स्वरूप हरियाती, ज्ञान स्वरूप उसकी हरियाती है, मौजूदगी, अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप मौजूदगी आत्मा के। उसमें से मन वचन काया की क्रिया के हटकर ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, उसमें लीन रहना, लीन होना, रक्त होना, पर से विरक्त होना, उसका नाम कायु सर्ग ने प्रायश्चित कहने में आता है। तो કેટલાય કાયુ સર્ગ કર્યા છે, તપસીધું તો આયા ખોટે ખોટા એ ક્યાં થાય છે? કાયુ સર્ગ તો એક ન્યાય છે, એમ કહ્યું ને તેમ એક પૂર ભગવાન આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ કાયા
જ્ઞાન સ્વરૂપી કાયા, એક તો મન વચન ને કાયાથી માંડી વિકલ્પ દયાદાનના વિકલ્પથી માંડીને બધું કાયા, જડ કાયા, काया दो प्रकार की, एक ज्ञान काया, एक जड़ काया। जड़ काया मन वचन काया मूल पुण्य अपना भाव, ये जड़ काया। एनासी निवृत्त करके ज्ञान स्वरूपी जी काया आत्मा में लीन होना, ये काय उत्सर्ग, अपना काय की भिन्न है उसका त्याग, अपना ज्ञान रूपी काय में लीनता, उसका नाम काय उत्सर्ग कहने में आता है। क्या नवराष्ट्र मलना आविवान रति बुधवाय वंदन जन આવે છે એમાં સાયણ જ્યાં પણ વચમાં કાવ્ય સાયણ સતત ગાનું કરણ પાય છે પાવાના ગમાને ગાને થાય કાયમી કાવ સર્જન એમ આવે એમ કાયસર કરું હું કાયસરની ભાન નમળે કાંઈ ને કાયસર કરું। कायसर तो उसको होता है कि जिसको निज ज्ञानानंद स्वरूप गाया, अपने स्वरूप અને રાગ દયાદાન વિકલ્પ से मानकर सारी दुनिया ये पर काया से विरक्त અને अपना स्वभाव रूपी काया से रक्त, उसका नाम सामायिक ने प्रायश्चित ने कायसर कहने में आता है। આ તો કઈ બહાને હોય ને કઈ સમય કરી, 5 સમય કરી, 3 સમય કરી, દૂરમાં સમય નથી। સામાયિકમાં તો સમતાનો વિતરાગપણાનો લાભ મળે। સામાયિકમાં સમતા વિતરાગપણાનો આ લાભ, વિતરાગપણાનો લાભ ક્યારે મળે, કબ મળે? वितरागपणा का लाभ कब हो कि वितराग स्वरूप आत्मा है, उसमें लीन होने से वितराग का लाभ होता है। बाकी मन वचन की क्रिया है सब, ये तो राग की क्रिया ने जड़ की क्रिया, उसमें तो कुछ आत्मा में लीन होना है नहीं। हाँ। ये श्लोक निवृत्ति के कारण है ત્રણેયને શબ્દ પહેર્યા છે। કાયાની ક્રિયાને त्याग, त्याग के कारण, वाणी क्रिया ने वृत्ति के कारण, मानसिक क्रिया ने निवृत्ति के कारण। त्रणेय अर्थ क्रिया, उसके कारण इतने बोलाया। निज आत्मा के ध्यान के, निज आत्मा के ध्यान के कारण ज्ञान स्वरूपी, आनंद स्वरूपी, वितराग स्वरूपी आत्मा, उसका ध्यान में हो जाना, उसका नाम काय उत्सर्ग है। उसका नाम सम्यक दर्शन सहित आत्मा में लीनता है। ये कहीं जी मन वचन काय की क्रिया को धर्म मानते हैं तो मिथ्या दृष्टि है, जैन है नहीं। जैन इसको कहते हैं घट घट यंत्र जैन वसे, घट घट यंत्र जिन वसे न घट घट यंत्र जैन। मत मन मदिरा के 500 मतवाला समझे, घट घट यंत्र जिन वसे, जिन स्वरूप आत्मा घट घट में थे एने जैन है, उसका ज्ञान करके उसमें लीन होना ये जैन। मत मदिरा के 500 अपना मतना अग्रना मदिरा पिया है तो सच तरफ वो जाते नहीं, बाहर की क्रियाकांड को धर्म मनाते हैं, क्या मरते हैं। समझ में आया? निज आत्मा को ध्यान के कारण निश्चय से
सतत का है उत्सर्ग, एक क्षण एक समय के मैंने सतत का है उत्सर्ग। ये स्थिति करते संयमियों की विशेष बात है। संकीर्ति ने थोड़ो काल अंदर होता है। मुनि को मुनि साचा मुनि है, उसको तो अंदर आनंद में खूब लीन होता है, उसको मुनिया कहते हैं। ये संयमियों को काय सर्ग है, निरंतर काय सर्ग, सतत है ना, सतत। सतत काय सर्ग है। 195 196 जयति सहज तेज पुंज निर्मग्न मग्न भास्वत सहज परम तत्व मुक्तम मोहांध कारम सहज परम दृष्टा निष्ठित मोह जातम भव भव परितापे कल्पना मिस मुक्तम। सहज तेज पुंज में निमग्न, तेज चैतन्य तेज अंदर भगवान आत्मा ज्ञान तेज नो पूर है। आ सब आंधड़ा शरीर वाणी मन पुण्य ने पाप दया दान व्रत भक्ति ये सब अंध है, जड़। चैतन्य तेज नो पूंज अंदर प्रभु। चैतन्य वस्तु जो है ये तो तेज का पुंज है, उसमें निमग्न। ऐसा यह प्रकाशमान सहज जैसे कि स्वाभाविक तेज पुंज में निमग्न, ऐसे प्रकाशमान अंतर में ज्ञान जी स्वभाव परिपूर्ण पड़ा है, उसकी एकाग्रता से उसका प्रकाश होता है। ज्ञान का पर्याय में प्रकट प्रकाश होता है। आगे बात, ज्ञान तेज थी भरेलू परमात्मा है, उसकी एकाग्र होने से पर्याय में ज्ञान का प्रकाश होता है कि जे ज्ञान अपने को भी जाने और पर को भी जाने, ऐसा प्रकाश अंदर से होता है। उसका नाम कायु सर्ग में प्राचित है। सहज तेज पुंज में स्वाभाविक तेज पुंज प्रभु, कोई सत्ता उसका अस्तित्व भगवान आत्मा का नया नहीं है, कोई उत्पन्न किया नहीं है, नाश नहीं है, तो सत्ता है, अस्तित्व है। जगत की एक चीज है जिन आत्मा तत्व आनंद खंड प्रभु। ऐसे जिसने सहज तेज पुंज में स्वाभाविक तेज पुंज अंतरना ज्ञान नो पुंज सहज भरेलो है प्रभु, उसमें जो लीन है निमग्न है। ऐसा यो प्रकाशमान, ऐसा यह प्रकाशमान राग द्वेष आदि अंधकार है। उन्होंने पाप का विकल्प राग को अपने को जानते नहीं, राग को जानने वाला तो ज्ञान है, तो ज्ञान स्वरूप जी भगवान ये तेज पुंज, तेज का पुंज है, उसका प्रकाशमान है। सहज परम तत्व जयवंत है। मुनिराज अपनी बात पन करते हैं। तेजना पूंजनो प्रकाश सहज तेज जयवंत वर्ते थे, है जयवंत है। ये हमारी दृष्टि में ये आया है तो हम कहते हैं कि आपको सत्ता कायम की अनादि की है, ये जयवंत वर्ते है। ऐसा जिसने किधर ना प्रकाशमान सहज परम तत्व जयवंत है। सब तो नाशवान है, शरीर वाणी मन
उसकी क्रिया हलन चलन, ये तो जड़ की क्रिया है, आत्मा नहीं है, आत्मा करके भी सकते नहीं। हाथ बाद हलाते भाषा ये आत्मा कर सकते नहीं। जड़ की क्रिया में आत्मा का अस्तित्व है नहीं, तो अपना जिमा अस्तित्व नहीं है, उसको कुछ कर सके नहीं। अपना अस्तित्व अपना आनंद में ज्ञान में है, तो त्याग और राग का निवृत्त करके उसमें लीन हो सके। कई जातનો ઉપદેશ કોઈ દી વાળામાં સાંભળવા મળ્યો ન હોય. બધું કહેતા ને નહીં કહેતા હતા તે દી પેલા 19 વર્ષ આ કરું ના કરું. ગુરુ એ બતાવેલું એમ કરતા પછી અંદરથી આવ્યું ભાઈ આ વસ્તુ તો ખોટી છે. બહારની ક્રિયા એ ધર્મ એ ખોટી વાત છે. ધર્મ એ આત્માનો આનંદ ને જ્ઞાન છે તે ધર્મ છે. અંત સહજ સ્વરૂપ એનું દ્રષ્ટિ કરતા પર્યાય અવસ્થામાં ચૈતન્યનો પ્રકાશ આવે કે જે પ્રકાશ સ્વને જાણે અને રાગ આદિને જાણે એવો પ્રકાશ એનમાં લીન હોના પ્રકાશમાન સહજ પરમ તત્વ જયવંત है. જ્ઞાનનો તેજથી ભરેલો પ્રભુ જેમ साकर गौपण से भरी है, शक्कर मिठास से भरी है, ऐसे भगवान ज्ञान से भरा है आत्मा. આવી વાતો ज्ञान में आनंद से आत्मा में सर्वांग आनंद है, आत्मा में सर्वांग ज्ञान है, आत्मा में सर्वांग वितरागता है. પણ એ દ્રષ્ટિ उसके नहीं પરૂપ દ્રષ્ટિ અનાદિત है. મનની ને વાણીની ને વિકલ્પની દયાની દાનની વ્રતની ભક્તિની કામ ક્રોધની ભોગની ધંધાની બાયની ધંધા હાજી રાખવાની ના ધંધો કરવાની પાપ ને પુણ્ય બે ઘણું अधर्म है. दो ही अधर्म. यह प्रकाशमान सहज पंत तो जयवंत वर्ते है. કે છે કે એ ચૈતન તત્વનું અમને ભાન થયું છે, જેથી અમે કહીએ છીએ કે જયવંત વર્તે છે. સત્તા છે, ચૈતનની સત્તા છે. એ અણુત્પત્તિ એટલે ઉત્પત્તિ જેની નથી, જેનો વિનાશમાં ભવિષ્યમાં જેનો નાશ નથી, અને જે વર્તમાનમાં ચૈતનના પ્રકાશથી ભરેલું તત્વ છે, એ તત્વ જયવંત વર્તે. દયાદાનના પરિણામને જયવંત વર્તે એમ ના કહીએ નહીં ક્યાં રાગે તો કઈ. ચૈતનના પ્રકાશથી ભરેલો પ્રભુ જયવંત વર્તે છે. સત્તા જેની મોજૂદગી, જેનું હોવાપણું અનાદિ આનંદ મોજૂદ છે. ભગવાન અનાદિ આનંદ અંદર મોજૂદ છે. मौजूद है. जिसने मुंह अंधकार को दूर किया है. भगवान चैतन्य प्रकाश जयवंत वर्त है. उसका ध्यान ने आलम्बन लेकर जिसने मुंह अंधकार को दूर किया, राग ने द्वेष मारा, पुण्य पाप मारा, दया में कई बन्नी में दया पाली, दया पालવાનો ભાવ તો રાગ છે. એ રાગ મોહ છે. ये मुंह अंधकार को दूर किया है. मोह रूपी બે વાત લીધી ને, પેલું પ્રકાશમાં લીધું હતું ને, ચૈતનનો પ્રકાશ લીધો હતો ને મોહનો અંધકાર લીધો. चैतन प्रकाश से भरेला है, मोह राग द्वेषी अंधकार है. कि नहीं अंदर सहज तेज पुंज में निमग्न ऐसा है प्रकाश में हम
परम तत्व जयवंत, जिसने मोह अंधकार को दूर किया है। अर्थात मोहन शब्द ये मिलता है, मोह अंधकार को दूर किया है। खरेखर मोह अंधकार उसमें है ही नहीं। समझ में आया? प्रायश्चित श्लोक आए, प्रायश्चित न छला श्लोक है। क्या किया समझ में आया? कि जिसने मोह अंधकार को दूर किया है, उसका अर्थ क्या कि वस्तु जो है उसमें मोह है ही नहीं। मोह अंधकार को दूर किया है, ये तो पर्याय की बात हुई है। समझ में आया? पर जिसमें मोह अंधकार राग द्वेष दया दान भाव सब मोह है, ये अंदर वस्तु में ये मोह है नहीं। ये मोह है नहीं, उसको अंधकार नाश किया कहने में आया है। है नहीं, मोह है नहीं, नाश करने वाला किया है। उसका अर्थ ही कि उसमें नाश है। चैतन्य तत्व में मोह नाश है, मोह है ही नहीं। द्रव्य ने मोह नाश करो, ये मोह क्या हुआ? એનો અર્થ એ દ્રવ્યને કર્યો ભાઈ, અર્થ કર્યો છે જો મોહ અંધકાર का रहित है, नाशનો અર્થ એ દ્રવ્ય સ્વભાવ જે ચૈતન્ય મૂર્તિ સચિદાનંદ પ્રભુ ભગવાન હરિહંત કેવળ જ્ઞાની ત્રિલોકનાથે आत्मा જોયો जैन प्रकाशमय आत्मा चैतन्य प्रकाश। ये मोह का अंधकार का नाश करने वाले का अर्थ कि उसमें मोह अंधकार है ही नहीं। जैन प्रकाश का पुंज है चैतन्य का, उसमें मोह है नहीं। है ना? मोह अंधकार रहित अर्थ किया है। ऐसा आता है, आते जाने का शैली में आवे। नहीं नहीं, ये नहीं, એમાં है ही नहीं ना कुछ नाश। उसमें है नहीं है, उसमें है उसको नाश करने की शक्ति हो, उसका नाश करने का, उसके प्रकट करने का, तो उसमें है ही नहीं। એની વાત છે પ્રભુ, દુનિયામાં તો બધું હાલે છે ત્યારે। વિતરાગ ત્રિલોકનાથ એનું જૈન તત્વ એ અલૌકિક તત્વ છે। એવું તત્વ ક્યાંય સર્વજ્ઞ સિવાય અને તે પણ દિગંબર ધર્મ સિવાય ક્યાંય છે નહીં। કઈ ઠેકાણે વાતે નથી ક્યાંય। બધું જોયું છે ને। 21 વર્ષ તો તેમાં રહ્યા દીક્ષામાં। આમાં પિતાજી સ્થાનકવાસી હતા ને, એમાં દીક્ષા લીધી। દીક્ષા પહેલા હું તો શાસ્ત્રો દુકાને ઘણી દુકાન છે પાડે ભરૂચ ને વડોદરા વચ્ચે વાંચતો શાસ્ત્ર આપણા સ્થાનકવાસી દર્શનશાળી ઉત્તરાધમ આચાર્ય નાની ઉંમરમાંથી 19 વર્ષની ઉંમર, અત્યારે 91 થયા। અત્યારે 91 વર્ષ થયા શરીરને, 91 19 વર્ષથી ઉંમરની ઉપરથી અભ્યાસ દુકાને કરતો હતો। પૂર્વના સંસ્કાર હતા એટલે ભાગીદાર દુકાને બેઠા હોય તો હું અમદાવાદ ન હોય ત્યારે દુકાને મારે બેસવું પડે। દુકાન છે ને અત્યારે, એ દુકાન છે દિલ્હીની છે, હજી મોટી દુકાન 40 લાખ રૂપિયા છે, 4 લાખની પેદાશ છે અત્યારે। એ દુકાન તેદી નથી, હું 5 વર્ષ મેં ચલાવી। પાપ ચલાવ્યું છે। દુકાનનો ધંધો એટલે પાપ, આખો દી પાપ, પાપ ને પાપ। धर्म तो नहीं, पुण्य नहीं। यहाँ तो कहते हैं कि पुण्य ने पाप ने मनवचन काया नहीं क्रिया, ये अंधकार है, उसमें है नहीं। प्रकाश में अंधकार नहीं, अंधकार में प्रकाश नहीं। समझ आया?
अच्छा, ये कहना है भगवान चैतन्य प्रकाश का पिंड अंदर कभी निजर नहीं किया, कभी विचारा नहीं, कभी मनन किया नहीं, कभी सुना नहीं। अंदर में चैतन्य प्रकाश का पूर्ण नूर प्रकाशमान है। અને मोह दया दान व्रत भक्ति काम क्रोधी अंधकार है। तो दो एक होता नहीं। नाश क्या है कहा, उसका अर्थ कि उसमें है नहीं। समझ में आया? આવું ખૂબ સાંભળવા મળે નહીં. બોલે ભૂકો તમારો શાનો ભૂકો છે? પ્લાસ્ટિક. પ્લાસ્ટિક પ્લાસ્ટિકનો ધંધો મોટો છે મુંબઈ. નવરાશ ક્યાં મળે? મારા દુકાનદારને હું તો કહેતો, બે દુકાનો ભાગીદાર હતા, બે દુકાનો, બે અમે ભાઈઓ, બે ભાઈ. એથી જ હું એને કહેતો હતો, શું કરો આખો દી કાંઈક શ્રવણ મનન વિચાર. એ તો 19 વર્ષની ઉંમરની વાત છે. અત્યારે તો એટલા ઉઠ્યા. પણ શું થાય, દુનિયાને આખી પડી છે. મા બાયડી છોકરા કુટુંબ રડવું ધંધો બસ બસ બહુ. ઘરમાં મળવા જાય ત્યાં 1 કલાક એવો સંભળાય ગુરુ નૂટી લે એનો કલાક. શ્રીમદ એમ કે કારણ કે ધર્મ બનાવે, પુણ્યમાં દયાદાનમાં વ્રતમાં ધર્મ બનાવે, એનો કલાક લૂંટી લીધો. લૂંટી લીધા ઉસમાં આ કે છે मोहनकार रहित है. भगवान आत्मा प्रकाश की मूर्ति है और राग आदि अंधकार का उसमें अभाव है. अंधकार में प्रकाश है नहीं, ने प्रकाश स्वरूप भगवान आत्मा, उसमें अंधकार नहीं. सारी बात के जिसने मोह ढूंढे मुहान का रही सहज परम दृष्टि से परिपूर्ण है. एनी जो सम्यक दर्शन से देखो आत्मा को, सहज निर्मल निर्विकारी निश्चय सम्यक दर्शन, उससे जो देखो ये परिपूर्ण है. भगवान परिपूर्ण है. आत्मा वस्तु है, ये परिपूर्ण है. वस्तु है अपूर्ण और विकारी होती नहीं. ये तो अज्ञान भाव है, अनादि काल से लक्ष्य दिया नहीं, ये रखते हैं. वस्तु है, ये परिपूर्ण है. ये दृष्टि हो किसी ने सहज परम दृष्टि से परिपूर्ण है. दृष्टि उसमें दिया बिना परिपूर्ण है, इसका ख्याल क्या से आया? परिपूर्ण है, ये ख्याल में आया बिना परिपूर्ण है. आया कहां से आया? ये चीज ज्ञान में ख्याल में आया, उसकी प्रतीति कैसी? ये ज्ञान में आती राशि ऐसा ख्याल आया बिना उसकी प्रतीति क्या अंधश्रद्धा है? आंधळी माने है तो लॉजिक थी, पण आखिरी बात में बहुत कहते हैं कि सहज परम दृष्टि એટલે સંકિત, स्वाभाविक संकित शुद्ध परमात्मा आत्मा, उसकी प्रतीति अनुभव सहित प्रतीति, ये दृष्टि से प्रभु परिपूर्ण है. पर्याय में अपूर्णता है, पर वस्तु तरीके परिपूर्ण है. समझाई से कहीं सहज परम दृष्टि से परिपूर्ण है. स्वाभाविक परम दृष्टि कृत्रिम नहीं, अंतर में से जागृत हुआ, चैतन्य ढंढोड़ी ने जागृत हुआ और अंधकार का ज्ञान नाश हुआ. भले रहा थोड़ा, पर अंदर मारी चीज में ये नहीं, ऐसी चीज में जब दृष्टि हुई तो ये दृष्टि का विषय परिपूर्ण है.
भगवान आत्मा दृष्टि का विषय परिपूर्ण है। હું ઉપદેશ ને આવી વાત બોલતા હું એક ઇન્ડિયા બેનની દેનની દયા પાડવી શકાય નહીં, દયા પાડવી શકાય નહીં, પિયર ને એ બધું ક્યાં આવ્યું? એ અજ્ઞાન છે બધું. શકાય નહીં દયા પાડવો એ માનનારો મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે, જૈન નથી. કેમ કે એક તત્વ બીજા તત્વને કાંઈ કરી શકતો ને અડતું નથી. એક તત્વ બીજા તત્વને અડતું સ્પર્શતું નથી. અને અજ્ઞાની માને ગવાને આમ દયા પાડું છું એટલે એ મિથ્યા છે. પણ દયા પાડવાનો ભાવ જે છે એ પણ રાગ એમવો છે. કેમ કે પર ઉપર લક્ષ ત્યાં એટલે રાગ છે, હિંસા છે. એનાથી રહિત ભગવાનનો ચૈતન્ય પ્રકાશ એ અંધકારથી રહિત છે. દયાનો ભાવ એ અંધકાર છે. ગજબ વાત છે ને. તો બધા દયા પાડો હાલી નીકળ્યા ઘણા મંડળીના નાયક થાય ને 2-5 લાખ ભેગા કરીને આપણે પાંજરાપોળ કરવાના, બોકડાના હાથ વંથાળવાના, એ બધી ક્રિયાઓ જડની પરની બાપુ ભાઈ તને ખબર નથી. પ્રભુ તો પ્રકાશનો પુંજ છો. એ જે થાય તેને જાણે પર તરીકે, થાય તેને માને સ્વ તરીકે એમ નથી. स्वाभाविक परम दृष्टि से परिपूर्ण है. दृष्टि में परिपूर्ण दिया देखा. संज्ञक दर्शन जो हुआ उसमें आत्मा परिपूर्ण मान आता है. संज्ञक दर्शन का विषय संज्ञक दर्शन नहीं, संज्ञक दर्शन का विषय परिपूर्ण तत्व है. समझ में आया? सम्यक दर्शन का विषय सम्यक दर्शन नहीं, क्योंकि तो पर्याय है. ये सम्यक दर्शन का विषय पर्याय का तत्व परिपूर्ण तत्व है. सहज परम दृष्टि से परिपूर्ण स्वाभाविक सम्यक दर्शन. एनातीत भगवान परिपूर्ण है और व्रथा उत्पन्न भव के परितापों से है तो भगवान परिपूर्ण आवो ऐसा. तो व्रथा उत्पन्न भव के भव ना कारण मुझे विकार भाव. चाहे तो दयादान भक्ति नो भाव पर भव का कारण है. भव मिलेगा, संसार मिलेगा. अरे खबर नहीं. प्रभु चैतन्य प्रकाश में दया का भाव राग है तो हिंसा है. स्वरूपनी हिंसा है. इन्हें धर्म मानते हैं. क्या जाना है इन्हें. आए कहते हैं स्वाभाविक परम दृष्टि जो है उससे वस्तु परिपूर्ण है. दृष्टि का विषय परिपूर्ण है. और जो वृथा मफतनो कैसे उत्पन्न भव के कार्य भव के परितापों से भव नो तापनो दुख ये राग ने द्वेष दया ने दान भक्ति ने पूजा काम ने क्रोध भोग ने धंधा ये બધો એકલા પાપ ને પણ બે ભવ નો પરિતાપ છે. એનું ફળ પરિતાપમાં ભવમાં રખડવાનું. આખરી વાત પ્રભુ નવાને તો સાંભળીને હોય કાને જે છે એવી વાત છે ને. અહીં તો 91 વર્ષ થયા, 45 તો અહીં થયા હોનગઢમાં 45 વર્ષ આવ્યા હતા. એ પેલા અહીં તો નાની 19 વર્ષની ઉંમરથી આ બધું છે. 10 વર્ષની ઉંમરથી તો સામાયિક આ બધું કરેલું. 10 વર્ષની ઉંમરથી. અને ચોયાર પણ જાવ જીવનો 5મી સાલથી જાવ જીવ
રાતી પાણીનો બિંદુ નિહાર નહીં, અને 5ની શાંતિ આથણું નહીં, આથણું અથાણા સમજે ને, આચાર કહેते ना आचार, जीवात पड़ती है उसमें, बरणी में रहते ना, बरणी में आचार आथना, तो उसमें जो ऊपर कपड़ा रहता है, ढंकन है, तो मैला कपड़ा होता है, हाथ अड़े न मैला होता है बहुत, तो उसमें कंधा होता है, नजर देखाया सब, यहाँ हमारी दुकान है ત્યાં हमने देखा था, नजर अरे आसनो खवाई नहीं आसनो, जैन ने आत्मा आवा કંસા પડેલા, ઝીણા કંસા પડેલા. હા 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 હા, એ કે છે કે વ્રથા ઉત્પન્ન ભવ ભવ કે પરિતાપ, મફતનો ભવ ભવના પરિતાપના પરિણામને કરે છે. હા હા હા, કરતે હૈ. પરિપૂર્ણ ભગવાન આત્મા इसे दृष्टि नहीं करते हैं, અને આ વ્રથા હા 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 હે મફતનો આ વસ્તુ પડી છે અંદર, ભગવાન મૂર્તિ પ્રકાશનો પુંજ પડ્યો છે એટલો, તું એની હામો જોતો નથી એટલે તને દેખાતો નથી. એકલો ચૈતનનો ગલ પુંજ છે, સાકરનો જેમ ગાંગડો આખો હોય, એ સાકર ગળપણથી ભરેલો, એમાં ભગવાન જ્ઞાનને આનંદથી ભરેલો ગાંગડો છે. એ ગાંઠ છે મોટી, શરીરથી ભિન્ન, આ તો માટે ધૂળ છે. મનથી જુદો, વણથી જુદો, વાણીથી જુદો, કયાથી જુદો. હા 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 હા, વ્રથા. અરે પ્રભુ, परिपूर्ण तू छो, दृष्टि जो देख तो तने परिपूर्ण देखाશે. परिपूर्ण देखने में आते हैं, પણ મફત નો પુણ્ય ને પાપ ને રાગદેશ કરી ભવ ભવના પરિતાપ ને સહન કરે છે. ભવ ભવમાં દુઃખ હે, કોઈ પણ ભવમાં સુખ નહીં. देव है भी दुख है. આ કરોડોપતિ મનુષ્ય જે અબજોપતિ है એ બધા દુઃખી બચારા है, કારણ કે પૈસા મારા એવું માનતા એ મહામિથ્યાત્વ મહાદુઃખ है. હા 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 હા, હમણાં આફ્રિકા ગયા હતા ને, છવી દી રહ્યા આફ્રિકામાં, નેહરુજી પૈસા વાળા, બહુ પૈસા, પૈસા બહુ, 450 તો કરોડપતિ છે એક ગામમાં, 450 કરોડપતિ, અને 15 અબજપતિ છે. તમારો મહાજન એમાં બધા કઈ બચારો આવ્યો, અબજપતિ આવ્યો ચેતનમાં. મહારાજ આ બધું ફેરફાર અમારે આને છે મંડળ, એમ તો તત્વની દ્રષ્ટિ કરો પછી સમજાશે. તત્વની દ્રષ્ટિ સમજાવીને આમ નામ તમારા અબજ બબજ ધૂળમાં નથી કઈ. એવા અબજપતિ તો 15 પીડ્યા ત્યાં નેહરુબીમાં. હા હા હા, સવેલી ત્યાં રહ્યા. માણસનો પ્રેમ બહુ, મહાજન બધા આવતા, મોટી સભા, ગુજરાતી ભાષા આપણે બધા સાંભળતા, સવાર બપોર રાતે ત્યાં હતું ચર્ચા, કોણ કલાકે. હા, શું કે છે? હા હા હા, એ દ્રષ્ટિમાં પરિપૂર્ણ વિષય પડ્યો છે પરમાત્મા અંદર, એની સામું જોતો નથી. તું તો વ્રથા મફતનો ભવ ભવના તાપના પરિતાપોને અને કલ્પનાઓ છે મુક્ત હેતી, અને તું કરે છે મફતનો હે. व्रथा उत्पन्न भव के परितापों से कल्पनाओं से तो मुक्त प्रभु है. हा 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 हा, क्यारे मुक्त થાય ત્યારે ના ના અત્યારે મુક્ત है. હા હા હા, है व्रथा उत्पन्न भव के परितापों तथा कल्पना से मुक्त है, क्योंकि परिपूर्ण वस्तु है. परिपूर्ण वस्तु है, उसमें पर वस्तु ताप ने दया ने दान ने ये બધા विकल्प है, उसमें है ही नहीं. हाँ 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 हाँ, 2 श्लोक क्या 157 है ना.
भव भव सुखम अल्पम कल्पना मात्र रम्यम तदखिलमपि नित्यम सम त्याजाम्यम आत्मश्रद्धा सहज परम सौख्यम चित्तमत्कार मात्रम स्फुटित निज विलासम सर्वदा चेदय हम. તમારું ને અલ્પ તુચ્છ ને કલ્પના માત્ર. આ ભવ ભવનું સુખ તારા અબજોપતિનું દેવનું રાજાનું એક અલ્પ અને કલ્પના માત્ર રમ્ય એવી રમણીય लगने वाला ये मात्र कल्पना से ही रमणीय लगने वाला वस्तु रमणीय है नहीं. मन वचन कायाમાં ભોગમાં ક્યાંય રમણીય है नहीं. મનની કલ્પનાથી રમણીય માનીને દુઃખી થાય છે, દુઃખી હોતા है. અરે આ તો ભાઈ સંસાર છોડે ત્યારે થાય. પેલો હજી નક્કી તો કરે અંદર, છોડે પછી છોડે એવો સંસાર સમજાય વિના હું છોડે. બાબા થઈ ગયા બુદ્ધિ વિનાના, સમ્યક દર્શન નહીં બાબા ભોગવ્યા સાધુ. એ છે અહીંયા तुच्छ ने कल्पना मात्र मात्र कल्पना से रमणीय मानने लगे ऐसा भव भव का सुख. એમાં મનુષ્યનું રાજા દેવ સબ આવે, સબ દુખી. चारे गति दुखी. चार गति है, नरक गति, त्रियंत गति, मनुष्य गति, देव गति. चारे गति दुखी है. નરક ની અંદર ગયો અનંત વાર, ત્યાં બી સંયોગના લક્ષ્ય દુઃખી દુઃખી ને દુઃખી. સ્વભાવનો આ લક્ષણ ત્યાં સંયોગ આ મળ્યો ને આ મળ્યો, મને અગ્નિ પડી દુઃખી. ત્રિયંતમાં મનુષ્યનું રો આમ ઉભા છે માણસ, અને ગાય ને ભેંસો આડા છે, કેમ કે આડોડાય કરી બહુ. માણસ આમ છે આડા. ભગવાન કહે છે કે બહુ આડોડાય, ક્રોધ માન માયા લોભ આડોડા એટલી કરી ત્યાં શરીર આડું થઈ ગયું, આત્મા તો અવળો છે તે. મનુષ્યને હયા તો એ ભોગમાન, વિષયમાન, આબરૂમાન, કીર્તિમાં ઘૂસી ગયો. દેહમાં હોવા ત્યાં સુખની કલ્પનામાં ઘૂસી ગયા. ચારે ગતિમાં દુઃખ હે. અહીં તો જયારે 25 લાખ થાય, કરોડ 2 કરોડ, ત્યાં તો અમારા સગા સુખી છે. અમારો દીકરીનો વર છે હુશાર, બહુ જમ 5 કરોડ રૂપિયા સુખી છે, ધૂળી નથી. આ બધા આવી વર્તા કલ્પનાઓ એનાથી તો મુક્ત સ્વરૂપ છે. એવી કલ્પના ફલ્પના આત્મામાં છે નહીં. અરે આ કોણ માને? હે માને કોણ? પણ ઉગમનો આત્મનો ફેર સંપ્રદાયમાં વાત ચાલે છે, એનાથી વાત તદ્દન બીજી. એ તો છોડ્યું છે તેથી ખબર છે ને, તેથી છોડ્યું ને. પૈસા વ્યવહાર થયા, બધું કર્યું હતું ને, બધું એની એક ક્રિયાઓ કાન બધું કર્યું જેટલું માન્યું હતું એમાં ધર્મ. પણ ભગવાન આત્મા ચૈતનના પ્રકાશનો પૂર ને નૂર, એને વૃથા ભવના તાપમાં પડ્યો છો, પણ એનાથી તો મુક્ત છો પ્રભુ. 84 ભવના તાપથી તો મુક્ત છો પ્રભુ. આચાર્ય મહારાજ જીવોને પ્રભુ કરીને બોલાવે છે, ભગવાન કરીને બોલાવે. પ્રભુ ભગવાન છો તું, ભગવાન હે તુમ, भगवान है तो पर्याय में भगवान होगा. भगवान तरीके तो बुलाते हैं सब आत्मा को, नाना मोटा अंदर अंतर भगवान तेरा स्वरूप है.
यहाँ के છે ભોગવના સુખના તબ में आत्मशक्ति से नित्य सम्यक प्रकार से छोड़ता हूँ। मुनिराज कहते हैं कि भवना दुख नो कारण जी विकार એને मैं छोड़ता हूँ અને પ્રભુને मैं ग्रहण करता हूँ। अरे बाबा ऐसा जो भव का सुख रमणी लगने वाला मात्र कल्पना रण्य ये सब मैं आत्मशक्ति से नित्य समय प्रकार के छोड़ता हूँ। देखो आत्मशक्ति से आत्मा सामर्थ्य द्वारा हूँ आनंद में ज्ञान सूर्यना सामर्थ्य द्वारा ये भोगवना सुखનું કારણ જે વિકાર તેને છોડું છું। उसका मैं छोड़ता हूँ। हिंदी भाई आया था ना हिंदी गुजराती तो अपनी मुंह हो भी आत्मशक्ति से नित्य सम्यक प्रकार से छोड़ता हूँ। छोड़ता हूँ छोड़वा लायक છે ને ધારી રાખ્યું છે ऐसा नहीं। प्रभु अंदर आनंद नो नाथ आनंद ने ज्ञान ने शांति ना सागर ने परिपूर्ण भरेलो प्रभु ये दृष्टिनो जो विषय है ये परिपूर्ण दृष्टि ने कारणे भवना कारण जी परिताप कल्पनाओ पुण्य पाप नहीं એને હું છોડું છું। સમજાય છે નહીં છોડ્યા હવામાન સંપ્રદાયમાં વાતમાં એક કેવા આવે રમત કે દયા પાડો એકંદરીની છે સપર કી દયા પાડો સપર પાડો જોયાર કરો અપમાન કરો એટલો બધી વાતો કર્યા નહીં થાય રાજની આત્મા બાત્મા નથી ત્યાં ધર્મ નથી એમાં એ કે છે અધર્મ છે ધર્મ તે નહીં તે અધર્મ છે અહીં તો કડક હોય કેવા કોઈ એ પરની દયા પાળવાનો ભાવ ધર્મ છે। ઉકાર કરીને કહીએ ક્યાં ગુપ્ત રાખી વાતો કારણ કે પર પદાર્થ અને આત્મા અડી શકતો નથી। કોઈ પણ પદાર્થ સ્વપણે છે પરપણે નથી પરપણે નથી તે પણ પદાર્થ તેના પણ છે પરપણે નથી તેથી કોઈ પદાર્થ પરને અડે અને પરનું રક્ષણ કરે કે મારે રણકાળમાં બને નહીં। આવી વાતો ક્યાં સાંભળવા મળે નહીં જાઓ હું ક્યાં બિચારા આવી વાત છે। મેં ये भवना सुख नो जिस है ये आत्मशक्ति से नित्य सम्यक प्रकार से छोड़ता हूँ। એ છૂટ્યા મને હવે રાગ થવાનો નથી। એમ કે છે મારો નાથ ભગવાન વિતરાગ દેવે જે આત્મા કહ્યો ત્રણલોકના अर्यंते आत्मा जो कहा उसमें कुछ राग मोह द्वेष उसमें है नहीं क्यों नौ तत्व में पुण्य पाप आश्रव बंध तत्व भिन्न है विनायक तत्व भिन्न है। नौ तत्व में विनायक जानना भिन्न है पुण्य पाप राग भिन्न तो है। भगवान ने ऐसा कहा ऐसा मैं मानता हूं अनुभव करता हूं तो मैं राग द्वेष को छोड़ता हूं। वो बात आई है मैं आत्मशक्ति से नित्य पासूं ऐसा आम के आम अशुभ ने छोड़ू ने शुभ ने राग करू ने एम नहीं। શુભ ને અશુભ બે વિકાર છે બે ને છોડું છું।
है? जिसका निज विलास प्रकट हुआ है, भगवान आत्मा वस्तु है, सत्ता है, मौजूदगी चीज है, तो उसमें सत्ता स्वभाव, उसका स्वभाव भी सत्ता त्रिकाल है। तो त्रिकाल जो उसका वस्तु है तो स्वभाव भी त्रिकाल है। ये त्रिकाल वस्तु में विलास में निज विलास प्रकट हुआ। आज रागमा में सुख मानता था, उनमें मानता था, ये सब नाश होकर निज विलास प्रकट हुआ। अपना आनंद का स्वरूप भगवान ये ऊपर नजर करने से आनंद का विलास दरिया में दिशा में प्रकट हुआ। બહુ મારે ટૂંકામાં ફેર્યું ઘણું. जो सहज परम सुख वाला है, प्रभु का कौन है? स्वाभाविक आनंद स्वरूप आत्मा है। आ तो तुम्हारा भोग ने बायडी ने छोकरा ने पैसा ने इतने कल्पना करी भोग में सुख माने तो जहर ना प्याला है। जहर ना प्याला पीवे ने माने के मैं सुखी चाहिए, हम सुखी है, जहर है। अमृत नो सागर तो भगवान है, आत्मा। अमृत का है देखो ने, जो सहज परम सुख वाला है आत्मा, स्वाभाविक परम सुख, स्वाभाविक परम सुख। आई तो जरी जाओ मेशू मळ्यो 4 મેસરજીનો 4 ઘી પાયેલો છે, એમાં કચરવૈયા મળે એના હવે હળવીના પાન તેલમાં આમ કડકા કરીને એના લાડવાના મોશ આવી જાય અંદર, એની અંદર ખાધું શું ધૂળ ખાધી છે। आत्मानो स्वभाव परम सुख वाला है अंदर, आत्मा का स्वभाव परम सुख वाला है तथा जो चैतन्य चमत्कार मात्र है। चैतन्य चमत्कार मात्र है, चमत्कार है। अपना क्षेत्र में रहकर सबको जाने, पर की अपेक्षा बिना सबको जाने, ऐसा चैतन्य चमत्कार है। चैतन्य चमत्कार मात्र है उसका, उस आत्म तत्व का मैं सर्वथा अनुभव करता हूँ। राग नो नहीं अनुभव, विकार का अनुभव, विकार का भाव ताप मिलेगा, જેમાં दुख मिलेगा। માટે હું उसको छोड़कर मैं सर्वथा सर्वदा सर्वदा अनुभव करता हूँ। आत्मा आनंद है, सुख है, उसका मैं अनुभव करता हूँ। ये धर्म ने, ये मोक्ष मार्ग है, बाकी बड़ी बातों है। वचन गुरुदेव